Hi everyone, this is Ashish Kyal here. Welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. Thank you for joining in on this Sunday morning at 11. मैंने सोचा क्यों ना आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो आप लोगों के साथ थोड़ा बातचीत किया जाए और देखा जाए कि मार्केट में करना क्या है। तो निफ्टी के ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल व्हाट इज द आउटलुक, वी विल लुक एट दैट एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आप सब साथ में हैं ऑन अ संडे मॉर्निंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये समझना कि हाउ इज द जोश टुडे, हाउ इज द जोश हाई। लुकिंग एट द मार्केट लास्ट वीक, आई एम श्योर दैट द जोश शुड बी हाई, राइट। जो काफी सारे जन नीचे अटके हुए थे और बोल रहे थे यार मार्केट ऊपर आएगा तो अच्छा है, तो ऊपर तो आ गया, लेकिन अभी लोग बोल रहे हैं कि यार कितना ऊपर जाएगा। हो रहा है आपके साथ, बट जो भी हो, ऊपर जाए या नीचे जाए, द जोश शुड नॉट reduce. So how is the josh today? Everyone is a very high josh. Absolutely. Okay, fantastic. So सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेट टू सी ऑल ऑफ यू ओवर हियर। दुर्गा, प्रसन्नजीत, Hussein, great to see you also here. Mohammed Kiran Naik, pleasure to have here. Prasanjit and all of you. Yes, the josh is high for every one of you. Hitesh, बहुत ही बढ़िया है। तो आज का एजेंडा क्या है? देखिए, आज का एजेंडा है कि हम डिस्कस करेंगे मार्केट पे टाइम साइकिल के बारे में, टाइम को लेके कि भाई निफ्टी का आउटलुक क्या है। अगर आपको ध्यान में होगा, हमने बात की थी कि अमावस्या, फ्रॉम द अमावस्या market formed a low, a lunar cycle worked out exceptionally well, and now we are going to talk about that how is the market going to look like from the Purnima. And remember, 13th of July is a Guru Purnima as well. So let's see if the trend can change from upside to downside. तो वो सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे लूनार साइकिल को लेके, 55 डेज टाइम साइकिल को लेके, और 15 मिनट चार्ट पे भी हम देखेंगे कि कहां पर मार्केट जा रहा है, कैसा लग रहा है। वो सब चीजों के बारे में हम चेक करेंगे। लेकिन उसके साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अनाउंस करना चाहूंगा। लास्ट वीक में वी हैव created an app and you can actually download that app. The link is in the comment section. Can you see that link which is pinned on the upside? I would advise every one of you to download the app now, because इस session में बाद में near this is going to be short like 30 minutes type, I am going to be also announcing free giveaway जो अवेलेबल होगा खाली ऐप के ऊपर। और साथ में एक और चीज का ध्यान रखना है, the free giveaway will be for the people who are active on the chat. तो आपको ध्यान रखना है कि आप चैट, इधर लाइव चैट जो चालू है वहां पर एक्टिव हो। चैट में बात करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूट्यूब चैनल के लिए। अब मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे, उसे सब्सक्राइब करिए तो आप चैट में कमेंट कर पाएंगे। तो डाउनलोड करिए ऐप को एंड कमेंट करिए वहां पर। और जो लोग ऐसा दोनों चीज कर रहे हैं उनके लिए फ्री गिव अवे होगा। लास्ट में हम एक स्पिन द व्हील गेम खेलेंगे जिसके अंदर जो भी आएगा वो आप लोगों को दिया जाएगा। तो दिस इज लाइक अ गिव अवे फ्रॉम माय साइड, and that is what I want. People should learn, because इस मार्केट में the problem is everyone is able to uh, everyone is able to just simply try to trade the market without learning. And that's why what we have done is Elliott wave का एक क्रैश कोर्स है जो फ्रीली अवेलेबल है टू ऑल ऑफ यू हु विल डाउनलोड द ऐप। उसके साथ में फ्री गिव अवे होगा फॉर एवरीवन हु इज कमेंटिंग, हु इज एक्टिवली कमेंटिंग ऑन द चैट। तो आपको एक्टिव भी रहना है, इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे और साथ में देखेंगे कि मार्केट का नजरिया क्या है। ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत आपको आ रही है ऐप डाउनलोड करने में, यू जस्ट व्हाट्सएप ऑन 9992042202। तो कुछ भी दिक्कत है तो 9920422202 पे आप व्हाट्सएप करिए। माय कलीग विल हेल्प यू आउट टू डाउनलोड द ऐप। मीनवाइल हम शुरू करते हैं, बाजार का आउटलुक क्या है, बाजार की नजरिया क्या है, और यहाँ से क्यों बाजार थोड़ा सा पॉज होता हुआ नजर आ रहा है। So this webinar is going to be in Hindi, English, and a very warm welcome to all of you who are here on this Sunday morning. I'm sure you are going to enjoy it. So Nifty, if you look at it, Nifty and Bank Nifty, what happened? Overall, the movement on the upside had been exceptional, which is good enough. Nifty managed to close above that 15,863 mark and went up. We discussed clearly, even I tweeted so many times. अगर आप जाके मेरा ट्विटर चेक करो, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है वहां पर, कि 16,193 का लेवल है जो इंपॉर्टेंट है।
कोई बता सकता है 16,193 का लेवल इंपॉर्टेंट है और निफ्टी का क्लोज फ्राइडे को किसके आसपास हुआ? Just go and check. I've already discussed this in my Friday webinar, but I'm again going to share it across with you. So let me open up my chart. I'm going to start with the overall outlook, looking at time. Time is something phenomenal. Okay, so let me open up my trading view. Before I move on to my trading view, I'm also going to be uh, uh, okay, you can't use the app on the computer, of course. You have to download it on your Android application. That's why you are not able to do it on the computer. It has to be on the Android phone. iOS का भी launch हो जाएगा soon. So ensure that आप phone भी handy रखो and साथ में install the app and we are going to give some free giveaway. Fantastic. Vishnu has downloaded it already. So Sanjay and Anurag, exactly the GAN level is 16,193. Now let's just get focused on what we want to do. Let's move forward. Overall, what is time? See, अगर आप कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं, if you are trading anything, you are actually trading not only price, you are also trading time. ये आपको समझ के चलना है, क्योंकि काफी सारे जन सोचते हैं कि हम खाली प्राइस को बाय कर रहे हैं, नहीं. You are also buying time along with it. Suppose आपने प्राइस को बाय किया. I'm asking you a simple question, very simple question, and I'm telling you if you just bought the price and 6 साल तक 5 साल तक कुछ मूवमेंट नहीं हुआ. ITC में हुआ था, right? For 5 years you bought it and there is no movement. Can I say this is a huge opportunity loss for you? Because कोई movement हुआ ही नहीं and 5 साल तक आपने buy करके रखा है, so what's the point? That's why आप खाली price को buy नहीं कर रहे, आप time को भी buy कर रहे हो. Whenever you want prices to behave, it has to behave with the momentum of time. आज तक सुना था momentum of price. आज सुनने में आ रहा है momentum of time. By looking at time cycles, you will be able to understand that there is not only momentum of price, there is momentum of time, which will tell you कि कौन से time से market reverse हो सकता है, कौन से time से momentum बन सकता है, and that times tells you. So if you look at the overall perspective of the market, you will see that there are multiple time acting on a price. इसका क्या मतलब है? See, I am not here to complicate things, to use jargons. I am only here to tell you in a very, very simple way कि time होता क्या है. Now, if I tell you that there is no rotation happening on the earth, अगर अर्थ रोटेट ही नहीं हो रहा है, तो can I say that the time has stand still? If the time has stand still, which means that nothing will happen, everything will stop. Try and think about it. It's making sense. Suppose if you go from a planet Earth to a planet Uranus or far away, where it takes hundreds of years to revolve around the sun, hundreds of years, you will not age the same way that you age on Earth. Okay? इसका क्या मतलब है? मतलब वहां पर अगर आप हो तो आपको बुढ़े होने के लिए बहुत टाइम लगेगा to get aged. In fact, if you go to a place where there is nothing happening, you will not even age. So time is a very, very phenomenal concept, very less understood. Okay, and it is very important that you clearly stay focused on the time. Stay focused on the time, because if time is favoring, you can actually, if time ka momentum zyada hai, you can actually make a lot of money by betting, by buying futures. If the momentum of time is less, then you can sell options. तो सब चीजें momentum of time के साथ चलती है, and that's why we will look at what is the overall momentum suggesting. But उसके साथ में एक और चीज जो आपको समझनी है कि अगर आपको पूछा जाए कि overall trend क्या है, the next question, if I ask you that what is the overall trend, you might want to say that the overall trend is up, overall trend is down, but it is missing. It is not a complete answer. You know why? Can someone tell me? If you tell me the trend is up or if you tell me the trend is down, it is not a complete answer. क्योंकि ये complete answer इसीलिए नहीं है because you can clearly understand trend कौन से time frame की बात कर रहे हैं. अगर आप इंट्राडे ट्रेडर की बात करें तो टाइम फ्रेम बहुत छोटा होगा and the trend is simply for a day or 2 days. अगर आप इन्वेस्टर की बात करें
तो टाइम फ्रेम हो सकता है 2 साल, लेकिन अगर आप अभी के जनरेशन के इन्वेस्टर की बात करें तो 3 महीना बहुत है। बराबर है कि नहीं? क्योंकि करंट जनरेशन ऑफ people, for them 3 months is like huge enough. I want to double my money in 3 months. That's the current generation. So nothing wrong with that. You can have unrealistic expectations. Who knows, that becomes reality. तो आज तक सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि यार ऐसे बेवकूफ भरे एक्सपेक्टेशंस मत रखो। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं? मतलब who said, who defined the rules कि ये नहीं हो सकता? किसने बनाए वो रूल्स? आई वुड से एक्सपेक्ट व्हाटएवर यू कैन ड्रीम ऑफ। देखेंगे होगा कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन आवर कैपेबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन आवर कैपेसिटी, वी विल सी इफ दैट इज पॉसिबल इन नॉट, बट एटलीस्ट गिव द एक्सपेक्टेशन विच इज स्काई रॉकेट हाई। अदरवाइज वहां तक जा ही नहीं पाएंगे। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ही रह गई तालाब में रहने की, तो हम नदी तक कैसे जाएंगे? तो एक्सपेक्टेशन बड़ी रखनी है, ये बहुत जरूरी है। आप सोच रहे होगे यार मैं एक्सपेक्टेशन की बात कहाँ कर रहा हूँ मार्केट में, मेरी एक्सपेक्टेशन तो एवरीडे डबल करने का है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन उसके लिए आपको टाइम समझना होगा। चलिए चार्ट पे चलते हैं। आई एम गोइंग टू clearly see very interesting comments that I can see, and before I'll share my screen also. Again, before I move on to the chart, share my screen, show you the time cycles and all of those things. A repeated announcement: download the app, which is the link there that you can clearly see on the screen, and you will be directed. और ये ऐप आप फोन पे डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड्रॉइड फोन पे। द लिंक आई एम शेयरिंग अगेन हियर, and there is a free giveaway at the end, and you have to be active on the chat also. Live chat पे भी आपको active रहना है. Unless you are active on the live chat, no giveaway. Unless you download the app, no giveaway, which is going to be spin the wheel at the end of the show. So chaliye, yes, this is a show, right, about markets. So I'm going to now go here, share across my screen with all of you, and देखेंगे कैसे करना है. Anurag Walia has a question: how many devices can mentorship program be used? You can use from mobile, you can use from anywhere. I think that's the link that we are going to give you to all the mentees. You can use it from anywhere. Okay, I'm now sharing across the screen, and here is my screen. Now chalte hai. I'm going to hide myself here very clearly. If you have doubts, questions, today I'm in a mood of answering your doubts and questions with respect to Nifty, with respect to questions, anything. So be active on the chat is what is important. So now if you go and check this chart, क्या आपको मेरी screen दिख पा रही है? Are you able to see the screen, and are you able to see the chat here? Not the chat, I mean the chart here. क्या आपको दिख रहा है? Okay, I'm going to go on a daily time frame chart first, and we are going to put an indicator which is known as a moon phase. बहुत टाइम हो गया ना मून को देखा नहीं. Let me just share across and tell about what the moon is looking like. And you know, in Mumbai it's heavy monsoon, and because of that you are not able to see the moon. But to be very honest, summers में भी नहीं दिखता है moon. Forget about the stars. So आजकल जो moon देख रहा हूँ मैं, वो चार्ट पे ही देख रहा हूँ, because that helps much better way to understand how is it happening, what are the trends suggesting, and all of those things. And यहाँ पे now we are entering into this. So why not you share across this webinar right now on a WhatsApp group, ask people to join in, because you will be seeing something astonishing basis of a lunar cycle. ये हमने बहुत डिटेल में किया भी था last time, but I'll just explain it to you very quickly. The lunars are acting very interesting. Let me remove all the drawings. Yes, the lunar cycle is acting very interesting. And if you see this screen, if you are able to see the chart here, what you are sure clearly able to understand is that the overall trend of the cycle, overall trend of the market since the top front is down. ठीक है, तो बड़ी टाइड तो नीचे की है, उतना समझ में आया. लेकिन वेयर इज द शॉर्ट टर्म मूव हैपनिंग? तो शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं. शॉर्ट टर्म में इफ यू लुक एट द साइकिल ऑफ द मून, कैन आई वेरी क्लियरली से दैट, and I need a big yes if you understand it. Can I clearly say that this was the period of Amavasya, new moon or a no moon? Nifty formed a low.
और यहां से एक भी बार क्लोज नहीं किया, ठीक है. दिस इज द लो विच फॉर्म्ड ओवर हियर एंड नॉट अ सिंगल क्लोज हैज हैपेंड बिलो द प्रायर लो. फैंटास्टिक. मतलब अमावस्या पे लो बना. पूर्णिमा के वक्त देखोगे तो इसके आसपास टॉप बना शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है. very very clearly that is what we can make out. This Purnima is the only cycle where you instead of a low you instead of a top you formed a low. This Purnima again a top and a down move. This Purnima after forming a top here it just went sideways. This one again a top, sharp correction, again a top, sharp correction, again a top, sharp correction, a top and a sharp fall, a top and a sharp fall. So can I very clearly conclude that after the top formed at 18,600 levels, after the top formed at 18,600 levels, Nifty is actually forming a top on the basis of Purnima. Okay, Nifty is forming a top on the basis of Purnima. समझ में आ रहा है? Very very clearly. ठीक है. Now, similarly, can I say that on Amavasya, try and see the chart. Let me just explain it to you very clearly. What is happening on Amavasya is what we want to understand. So we are discussing here lunar cycle, which is powerful way to time the market. Okay, but time is dynamic. Time is dynamic. So you have to understand, you have to club this with price action also. You have to club this with price action also. Very very clearly. Now many people simply look at the moon and say it does not work. See, I am not lunatic. Lunatic matlab, you know right what is that. Moon को कहा जाता है सोमरस. सोमरस means bliss. बराबर है, if I am not mistaken. So moon has the capability of doing a lot of things internally. क्यों कहते हैं हम इसे सोमरस के फॉर्म में मून को देखा जाता है? क्यों हम लुनेटिक कहा जाता है, मतलब पागलपन, दीवानापन क्यों कहते हैं? Because moon has impact on every single one of us in ways we do not understand. If you only pay attention to yourself, if you know how your body is, how you behave every day, very close attention, it happens through meditation. If you do that, you will realize that you do not really have to know and see the moon in the sky. You can actually make out what is the phase of the moon, but that requires some attention. Remember one thing, anything in life will yield to you only if you pay attention to it. Now that's a very important thing. The reason I am saying is you need to pay attention to chart. Why? अगर कोई भी चीज आप पाना चाहते हो, आपको उस पर ध्यान देना होगा. You have to pay attention. What does it also mean? It also means that suppose if you are sitting here but your thought and emotion is all the way somewhere else, you are all occupied with something else. Maybe आपका झगड़ा हो गया आपकी गर्लफ्रेंड के साथ. You are occupied in that thought but you are sitting here. You will miss most of the session that I am conducting right now because you are occupied with your thought. The sound is coming in, it is falling on your ears, but you are not listening to it. Isn't that true? Isn't that a fact? So it's very important you understand this basic way in which human being can function, which means we have the ability to do things without even understanding it. Okay, so I have the ability to not listen to you because I am somewhere else. I might be here but I am somewhere else. That is what we call so as mind, and moon has a very very huge impact on the mind. Okay, and that's the reason it has an impact on the stock market. There is no second thought.
the impact on the stock market can be very tricky, because on the market it is not only the this moon cycle which is acting. There is a solar cycle that is also acting. Okay, and that is why there is all of those uh, multiple cycles that is acting on the planet, multiple cycles acting on the moon at the same time, on the stock market at the same time. So it is lunar cycle, it is solar cycle, it is other planetary movement and cycles. So to be honest, I am not an astrologer. मुझे एबीसी भी पता नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, बट आई जस्ट नो हाउ इट बिहेव्स ऑन द साइकिल ऑफ मून. तो समझ में आया कि मून साइकिल किस तरीके से एक्ट करता है पूर्णिमा के वक्त, और स्टॉक प्राइसेस में क्या बिहेवियर होता है. सिमिलरली अमावस्या के वक्त अगर देखेंगे तो थोड़ी स्टेबिलिटी देखी जाती है, थोड़ी स्टेबिलिटी देखी जाती है ऑन मेनी ऑफ द ओकेजन. तो यहाँ पर अमावस्या पे लो बना, स्टेबिलिटी, यहाँ पर लो बना, स्टेबिलिटी, लो फॉर्म्ड हियर, अ गुड रन अप, a low formed here on the budget. ये this was a budget. इनफैक्ट बजट के काफी पहले मैंने मास्टर ऑफ वेव्स का जो सेशन था हमारा उसमें बताया था कि बजट विल बी बुलिश basis of the अमावस्या. फर्स्ट ऑफ फेब was अमावस्या and budget formed a low here and rally stability. Then on this अमावस्या there is nothing much happened. It just went down and went up. This अमावस्या again a low formed here and stability. This अमावस्या created a top. Now ये थोड़ा सा डिफरेंस था. देखो, this अमावस्या created a top here and पूर्णिमा created a low. This ये थोड़ा सा अदला बदली हो गया, but otherwise back to the same cycle. This अमावस्या again stability, sideways to up. This अमावस्या again stability. Do you agree with me? I mean, you just don't have to buy my story. You have to agree only because you have the fact. See, how do you know someone is making sense? Okay, you should agree only if you see that it is making sense. Just don't do it because I am telling you. You can go and check it on with yourself also on the chart. So एक चीज तो पता चल गई कि भाई पूर्णिमा पे टॉप्स बन रहे मोस्ट ऑफ द ओकेजन, अमावस्या पे लो बन रहा है या स्टेबिलिटी साइडवेज से थोड़ा पुल बैक. I want a big yes from all of you over here. As I said, there is a giveaway at the end of the session for people who are active on the chat and people who are downloading the app. So ensure a big yes. You don't want to miss out on that free giveaway. Spin off will we are going to do. ठीक है. So यहाँ और आप चैट पे तभी पोस्ट कर पाओगे if you are subscribed to the channel. So ensure you are subscribing to the channel so that you can post it in the chat. तो आगे बढ़ते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? 13th of July, which is a पूर्णिमा, something might happen. एक डेट मिली हमें, ठीक है, 13th of July की एक डेट मिली. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट डेट. 13th का मतलब ये नहीं 13th को ही होगा, 14th को हो सकता है, टाइम है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, ठीक है. एंड आई कैन सी एवरीवन इज सेइंग अ बिग यस. दैट इज रियली लवली एंड दैट इज फैंटास्टिक. ग्रेट टू नो दैट. तो 13th of July की डेट नोट की गई. अभी चलते आगे दूसरी डेट पे. तो देखो हम अभी प्राइस पे फोकस नहीं कर रहे, वी आर फोकसिंग प्योरली ऑन टाइम. नाउ वी विल मूव ऑन फर्दर. ओके, क्लियरली फर्दर ऑन अ टाइम साइकिल बेसिस ऑफ हर्स्ट टाइम साइकिल. ये था लूनार साइकिल. अब हर्स्ट टाइम साइकिल के बेसिस पे मैं आपको चार्ट दिखाने वाला हूं. ओके, आई एम गोइंग टू नाउ ओपन अप माय टाइम साइकिल. यहां पर आ गए, लूनार को हाइड कर देते हैं. मास्टर ऑफ साइकिल्स में हमने बहुत डिटेल में किया था. फॉर पीपल दे माइट ऑलरेडी नो दिस, आई एम जस्ट शोइंग द एप्लीकेशन नाउ. और यहाँ पर लेबल्स है. I don't want to delete those labels right now, इसलिए रखा है. Let me see if we can hide across just the labels, not the drawings. नहीं होगा शायद, या पूरा हाइड हो रहा है, चलेगा. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रेड लाइन, द रेड वन, ठीक है, द रेड लाइन which you are seeing right now, this red line is a 55 day cycle. इसका क्या मतलब हुआ?
एवरी 55 days द मूड ऑफ द पीपल चेंजेस। हर 55 दिन में लोगों का मूड चेंज हो जाता है। क्यों और कैसे वो तो पता नहीं, लेकिन ऐसा होता जरूर है, क्योंकि ये मैं 10 साल से यूज कर रहा हूं और ये 10 साल से चल भी रहा है, 10 साल से ज्यादा ही हो गए। एंड दिस वर्क्स एक्सेप्शनली वेल। ठीक है, अगेन आई गिव यू द प्रूफ। देखिए क्या है, अगर मैं आपको प्रूफ नहीं दूंगा तो आप बोलोगे कि ही इज लूनेटिक। व्हेन आई फोरकास्टेड मार्केट इन 2013, 2013 के साल में मैंने फोरकास्ट किया था निफ्टी को, सेंसेक्स को 61,000 2021 तक में, वो हो गया। लेकिन 2013 में लोगों ने बोला ही इज लूनेटिक, क्योंकि सेंसेक्स तभी चल रहा था 17-18 हजार और मैंने बोला था 61,000 जाएगा, मतलब 17-18,000 टू 61,000 का जर्नी। बैंक निफ्टी था 12,000 एंड मैंने बोला था 40,000 जाएगा विद द टाइम लाइन। आई जस्ट डिडंट गिव रैंडमली एक नंबर दे दिया यार कभी तो जाएगा, नहीं, आई सेड विद द टाइम लाइन कि कभी तक जाएगा, बेसिस ऑफ दिस साइकिल। क्योंकि रैंडमली तो आप बोल दोगे सेंसेक्स 1 लाख जाएगा, लेकिन कभी जाएगा 1 लाख तो कभी तो चला ही जाएगा ना, 20 साल में, 30 साल में, 10 साल में। बट द पॉइंट इज, कैन यू टेल इट विद द प्रिसिशन ऑफ टाइम? दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इफ समवन टॉक्स टू यू दैट फ्रॉम हियर निफ्टी इज गोइंग टुवर्ड्स 17,000, हाँ जा सकता है ना यार, 2 साल में चला जाएगा 17,000, हु नोस, या 2 दिन में चला जाएगा, हु नोस। So it is very, very important that you have to understand this clearly. Sumit Jajani is saying, sir, I'm making profits on stocks recommended by you in your equity report, such as insecticide, Asahi Glass, Monte Carlo. Fantastic, Sumit. पता नहीं था मुझे, great to know that. So आज का जो फ्री स्पिन होने वाला है ना एंड ऑफ द शो, उसमें इक्विटी रिपोर्ट भी है। तो देखेंगे क्या आएगा स्पिन विल में, लेकिन फिलहाल चलते हैं क्लियरली ऑन द चार्ट अगेन। सो यहां पर अभी देखेंगे 55 डे साइकिल की गतिविधि क्या है। सो इफ यू चेक हियर, कैन आई से इट फॉर्म्ड अ लो साइडवेज एंड द मोमेंटम, फॉर्म्ड अ लो थोड़ा सा लेट एंड द मोमेंटम, फॉर्म्ड अ लो एंड द मोमेंटम, formed a low exactly when it is supposed to be with a big momentum, formed a low thoda sa early and a momentum, and the next date आपको चाहिए कभी ये लो बनने वाला है, the next date is going to be 17th of August 2022. Can you make a note of this, guys? 17th of August 2022 पे एक लो बनेगा। Yes, it can be applied to. So Ashwini, as I said, I'm answering all the questions of people who are active on the chat. I'm answering this question. This works on stocks, so you can apply it on stocks, you can apply it on commodity, you can apply it on anything and everything. ठीक है, ये ध्यान रखना आप। It can be applied on across the time frames, across the place, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, 5 मिनट पे, टिक चार्ट पे, all of those things। ठीक है, सो 17th of August 2022 को वहां पर लो बनना चाहिए। दैट इज व्हाट इज वी कैन से। सो 2 डेट मिली, वी गॉट 2 dates, वन इज 13th of July, वन इज 17th of August, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। नो इंट्राडे ट्रेडर सोच रहे होंगे यार इससे मुझे क्या फायदा होगा, मतलब ये तो समझ में आया, लेकिन इंट्राडे पे क्या करूं, मैं तो ऑप्शन ट्रेडर हूं, डेली ट्रेड करता हूं, क्या मैं 17 अगस्त तक कुछ ना करूं, वहां तक बैठ के मैं छुट्टी पे जाऊं, वेकेशन पे जाऊं? नहीं, उनके लिए भी है। सो दिस डेट्स विल गिव यू द टर्न अराउंड। इसका क्या मतलब हुआ, फिर हम जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे भी। इसका मतलब हुआ कि यहां से अगर निफ्टी में फॉल आया, इफ देर इज अ सेल ऑफ विच सी, यहां से या ऊपर से कहीं से भी, तो लो बनेगा कभी 17 अगस्त। सो अगर आप SIP करते हो, you should do SIP every 55 days starting the 17th August as the first installment. Trust me, the amount of money you are going to make in an SIP is way beyond than anyone else can make, because you are buying exactly at the low. यहाँ पर बाय किया, पैसा बन गया, यहाँ बाय हुआ, पैसा बना, यहाँ बाय हुआ, पैसा बना। So you are buying exactly when you should supposed to buy. Even stocks, I'm telling you, just identify this time cycle. I've given this time sheet to my master of cycle participants of the last weekend.
In fact, guys, we also have a follow-up session next week for Master of Cycles and mentees who are the mentorship is starting on the 30th of July. So उनके लिए भी वो session होगा. And clearly you can do that. You will be able to understand that clearly. ठीक है? Now चलते हैं short term time frame. Is it clear? Everyone understood the 55-day cycle and the lunar cycle? Just tell me a big yes if you understand it. It's very important for me to know कि आपको समझ में आ रहा है ना, because अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. क्रूड ऑयल का डेट भी बताइए. चलिए, क्रूड ऑयल के बारे में अगर बातचीत हो रही है तो मैं देखता हूं मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट यहाँ पर सेव कर रखा है कि नहीं. क्रूड ऑयल का चार्ट है मेरे पास और 115 डेज का साइकिल यहाँ पर नहीं डाला हुआ है, which is I think I'm going to share that cycle with you. Do you want to see cycles on crude oil? क्रूड ऑयल पे साइकिल देखना है किसी को? एंड क्या चलता है, मतलब हर 115 दिन में क्रूड ऑयल में लो बनता है. मालूम है आपको? ध्यान होगा थोड़े टाइम पहले, आज से 2 हफ्ते पहले मैंने बोला था इन्फ्लेशन कम होगा, क्रूड ऑयल फॉल होगा, एंड एवरीवन विल से इन्फ्लेशन इज ईजिंग बिकॉज द टाइम टर्न फॉर क्रूड ऑयल. आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग फिनोमिनल. बताऊं मैं आपको क्रूड ऑयल का साइकिल? दिस इज बिकॉज आई थिंक ओवरऑल very few people pay attention to crude oil, but it is amazing and the cycle works like magic. ट्रेडिंग डेज है विनय, जो भी हम बातचीत कर रहे हैं ये सब ट्रेडिंग डेज के बेसिस पे. ओके, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट इट राइट नाउ वेरी वेरी क्लियरली. सो यहाँ पर मैं साइकिल एक प्लॉट कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू टेक अ 415 डे का एक साइकिल है. यहाँ पर आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग कि ये कैसे प्लॉट करता है, क्यों प्लॉट करना है, कैसे ट्रेडिंग व्यू को यूज करना है, बिकॉज ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं ओवरऑल मास्टर ऑफ साइकिल्स के प्रोग्राम में 149. इनफैक्ट आपको वो मास्टर ऑफ साइकिल्स अगर देखना है तो ऐप पे अवेलेबल है. यू कैन एक्चुअली गो एंड सब्सक्राइब टू इट एंड यू कैन वॉच द एंटायर साइंस बिहाइंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. तो क्रूड ऑयल के ऊपर ये जो साइकिल है ना, दिस इज सिंपली माइंड ब्लोइंग. 115 डेज का साइकिल है. तो यहाँ ये सिंपली माइंड ब्लोइंग है. ओवरऑल अगर आप इसे देखें, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हाँ यहाँ पर. नाउ इफ यू लुक एट इट, you don't have to buy my story, you just have to say yes or no. Are we in? I want this is a very different session than every other session. This is purely an interactive session. So I want you to interact as I say. So do you agree with me? Just say yes or no on the questions that I'm asking you. Do you agree with me कि क्रूड ऑयल ने यहाँ पर लो बनाया एंड यहाँ से रैली हुआ? Yes or no? Yes. Crude oil formed a low here and यहाँ से रैली हुआ? Yes. Crude oil formed a low here, यहाँ से रैली हुआ? Yes. क्रूड ऑयल थोड़ा सा डिले पे लो बनाया, a little later, but rallied big time here. Fantastic. समझ में आया? 1 2 3 4. Crude oil formed a low and a rally. Crude oil formed a low and a rally. Crude oil formed a low and a rally. Wow, that is something. इसका क्या मतलब हुआ कि यार ओपेक कंट्रीज, मिडल ईस्ट, ये क्या बैठ के देख रहे कि हर 115 दिन में हमारा प्रोडक्शन कम करेंगे जिससे क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा, या एवरी 115 डेज इंपोर्ट कम हो जाता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस, इंपोर्ट बढ़ जाता है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाता है. यू नो रशिया यूक्रेन वॉर, कैन समवन टेल मी वो न्यूज कब आया था रशिया यूक्रेन वॉर का? लेट्स सी किसको किसको याद है. लेट मी चेक हु ऑल रिमेंबर द रशिया यूक्रेन वॉर का डेट. व्हेन वाज द न्यूज अनाउंस्ड? कौन बताएगा मुझे कौन से दिन पे? अभी मल्टीपल डेट्स नहीं देना. वो जब रशिया यूक्रेन वॉर आउटब्रेक हुआ वो का उसका डेट, एग्जैक्ट डेट क्या था जब वो न्यूज अनाउंसमेंट आया? कैन समवन टेल मी? किसी को मालूम है कि ये जो रशिया यूक्रेन के साथ हुआ था ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है. दिस वाज एनीवे सपोज टू हैपन. फैब में था वो तो पता है, बट कौन सी डेट को था? द एग्जैक्ट डेट.
Great to see you, Amit, also here. Amit Singla, Kalpesh, fantastic. You have been very active. I can see that. 24th of Feb को वो डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। देखते हैं चार्ट के ऊपर 24th ऑफ फेब कहां पर है। चलिए देखते हैं। कैन आई से द 24th ऑफ फेब, यहां पर से देखेंगे कि 24th ऑफ फेब कहां पर है। तो 24th ऑफ फेब है यहां पर। वाओ, दिस इज 24th ऑफ फेब, कैन यू सी दैट। एंड क्रूड ऑयल का मोमेंटम है ना 21st ऑफ मार्च से। तो 24th ऑफ फेब को यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर का। टेल मी, ये इसके पहले ही आपको पता था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है क्रूड ऑयल का? बिफोर द वॉर इटसेल्फ, डिड यू नॉट नो दैट क्रूड ऑयल इज सपोज टू गो अप बिकॉज 115 डे का साइकिल वॉज सपोज टू किक इन ऑन अ क्रूड ऑयल, है ना। फैंटास्टिक। मतलब आपको ये होने के पहले फ्यूचर देखा जा सकता है। कैन यू इवन बिट दैट? यू कैन एक्चुअली सी द फ्यूचर। कैन यू इमेजिन? which means you knew crude was supposed to go up anyways and it went up. तो क्या ये क्रूड ऑयल रशिया यूक्रेन वॉर के कारण है? नहीं। एक और चीज, when everyone is too focused कि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण क्रूड ऑयल ऊपर गया, can I say crude was here when the Russia Ukraine war was announced and crude is still here when the Russia Ukraine war is going on? तो हुआ क्या? Now here is a very important question that I am asking you all. रशिया यूक्रेन वॉर के अनाउंसमेंट से लेके एक दिन पहले तक क्रूड वहीं पे है जहां पर वॉर शुरू हुआ था। फरवरी टू जुलाई की जर्नी में राउंड ट्रिप किया। एक सॉन्ग है ना, टू द मून एंड बैक, सैवेज गार्डन का। एनीवन रिमेंबर दैट सॉन्ग? दिस वाज ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग डेज। आई यूज्ड टू हियर दैट सॉन्ग and that was a fantastic song by Savage Garden, to the moon and back. That's what crude oil did, to the moon and back. It went all the way there and it is back. Okay, so that's a beautiful song if you people want to hear that. And it's related to moon. Anything related to moon, I love it, because moon has a lot of impact on everything. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो crude is back to where it was. The question that you should ask the fundamental guys is, what happened to the Russia Ukraine war? Is it still going on? Yes, it is still going on. Nothing changed. So why is crude back to the level despite of the war? See, war mein, can I say you require a lot of ammunitions? Okay, lot of ammunitions are required, because and lot of oil is required for sure. Also, can I say that another thing, because of Russia not supplying the oil to majority of the world now, the demand, the production went down. Okay, there is a bottleneck now that the oil is not being supplied to the world by majority of them. Oil is supplied by the Middle East now. So logically, the prices of oil should go up. Hussein is saying the song release date 1997, to the moon and back. Fantastic, Hussein. That's the date. So everything we talk about is date today. ठीक है, तो आइडियली तो क्रूड का प्राइसेस बढ़ना चाहिए था और ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्रूड का प्राइसेस वहीं पे है जहां से वॉर शुरू हुआ था। ये ऐसा क्यों हुआ? एवरीवन इज फोकस्ड ओनली ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। Tell me, though for a movement to happen, there are two sides of the equation. There are two sides of the coin always: demand and supply. Demand and supply. There are two sides of the coin. यहाँ पर इसका मतलब क्या है? Supply कम हुआ because Russia is not supplying oil now to the majority of the world, and only Middle East is supplying. So can I say the supply is reduced? Do you agree with me? Yes or no? Please be active on the chat. Otherwise free giveaway नहीं मिलेगा उन लोगों को. So we have the statistics on the chat, of the chat. So do ensure you are having
actively on the chat and also on the app. The reason being, because if you are not active on the chat and haven't downloaded the app, you will not be eligible for the free giveaway, which I'm going to announce in some time. ठीक है? So चलिए, मैंने link share की है उसके लिए. So can I say very, very clearly, the demand is reduced. Fantastic, Anil Shetty. You are simply awesome. Okay, the demand has come down, and that's the reason why we can say that the crude oil prices are there where it is supposed to be. इसका मतलब हुआ वर्ल्ड में कुछ तो चेंज हो गया. खाली प्राइसेस क्रूड का इसलिए गिरा है, रशिया यूक्रेन वॉर से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डिमांड स्लंप हो गया. दैट इज फॉर श्योर. नाउ क्रूड का डिमांड स्लंप कब होगा? व्हाट इज द लॉजिक? Which means manufacturing demand is now falling. If manufacturing demand is falling, which means the sentiment of the world is turning into a bearish phase. If the sentiment of the world is turning into a bearish phase, that is what stock market is reflecting. The market is already down from the top of 18,600, which means market is already seeing the future. Or by looking at time, you are seeing the future. मतलब आपको मैं यहाँ पर power दे रहा हूँ to see the future. Are you not astonished? In just no time you are having the power to see the future. Are you not astonished? Isn't that something awesome? I'll again repeat the logic. Because of Russia-Ukraine war, the supply constraint happened. But crude oil back to the moon and back where it was on 24th of Feb. Which means the other side of the equation got distorted, which means the demand simply slumped drastically. Demand slump का मतलब है crude oil prices नीचे आए तो इंडिया के लिए अच्छा है क्या? फिर भी tell me one thing, from March 2020 can I say that the crude oil prices also rallied and the Indian stock market also rallied? Do you agree with me with that fact that the overall correlation between stock market and between crude prices is actually positive? Wow, that is an eye opener. That will change the way you see everything in your life now. Market, crude oil crashed, Nifty crashed. Crude oil rallied, Nifty rallied. Crude oil down, markets down. Short term में correlation plus minus हो सकता है कि भाई क्रूड ऑयल गिर रहा है और मार्केट रैली हो रहा है, बहुत शॉर्ट टर्म में ये कभी कभी होता है. बट ओवरऑल ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड, बिगर टाइम सजेस्ट दैट निफ्टी is not divorced with crude. Okay, Nifty is not divorced with crude. Nifty and crude का पॉजिटिव बंधन है, एक साथ है, together, not opposite. They are together. That's the relationship between crude oil and Nifty. They move in tandem. So आज के बाद एक गांठ बांध लो समझने के लिए कि ओवरऑल ट्रेंड में निफ्टी और क्रूड का बंधन पॉजिटिव है. सिमिलरली ओवरऑल ट्रेंड में निफ्टी और रुपी का रिलेशन भी पॉजिटिव है. मतलब यूएसडी आईएनआर डेप्रिशिएट होता है तो भी निफ्टी ऊपर जा सकता है, यूएसडी आईएनआर नीचे जाता है तो भी निफ्टी ऊपर जा सकता है. लेकिन ओवरऑल कहना इसे निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई टच किया 18,500 के आसपास. उसी वक्त रुपी ने भी डेप्रिशिएट होकर 74 का लेवल टच किया था. तो मतलब जो लोग सारी दुनिया सोच रही है रिटेलर, सी आई वर्क विथ हेज फंड, I have worked with mutual funds. I know how these people think. I know how the fund houses think. This is what they see and this is what they trade. And आप लोग देख रहे हो क्रूड ऑयल नीचे, निफ्टी शुड गो अप, क्रूड ऑयल ऊपर, निफ्टी शुड गो डाउन. अरे बॉस, go back and check with do your homework and see is there a negative correlation. In fact, अगर आप statistical study भी करोगे, you will not find a negative correlation here. You will find to the extent of 0.80 positive correlation between Nifty and crude oil. Put it on the stats. ठीक है, everyone is clear with it. चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है. Now we want to move forward to the date of crude oil की चर्चा पे आ गए तो थोड़ा सा क्रूड के बारे में बातचीत हो गई. But now the date of crude oil is
Vinay asked for me the date and that's how it started. So the date for crude oil is कहाँ गया 20th of July. 20 जुलाई का डेट है क्रूड ऑयल पे, जो मैंने अभी नहीं बहुत टाइम से बोला. तो मतलब 20 से 25 जुलाई के आसपास में अगेन द क्रूड विल स्टार्ट बॉइलिंग. दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक as per the time. So the time will favor crude oil post that. Shall we move on to Nifty again in a 15-minute chart? Option traders. Are there option traders here? Let me ask you. Are there option traders who are trading options, looking at the overall movement of market and try to buy option, double their premium, double their amount? All of those people are here with me. ठीक है, चलिए. I can see many of you are there. So lot of interesting insight happening. So we have opened up Nifty now for the option traders. हमने Nifty का 55-day cycle देखा, हमने Lunar cycle देखा. Now we will look at the option chart very clearly. Are you able to hear me, everyone? Okay, I can see so many of you are trading in options and you are able to hear me. चलिए, fantastic. अगर आप चैट नहीं कर पा रहे तो you have to understand that clearly. You have to very clearly understand कि चैट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल पे. Now I am going to go on a Nifty chart. यहाँ पर we can clearly see overall movement. Forget about the wave counts, A B C D. This is Elliott wave and Neo wave count. उसे छोड़ दो. ये जो रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन, the red one, ठीक है, that is what I call as a time cycle for a short term trading. Time. Let me ask you, and you have to agree or disagree with me. Okay, if you agree with me, say agreed. If you disagree with me, say disagree. ठीक है. Can I say from this red line, alternate red lines देख रहे हैं हम, alternate red lines देख रहे हैं. Can I say from this red line, the alternate red lines, this is a low formed here and market rallied? Agreed or disagreed? Everyone, I want you to participate. I want you to put it in the chat. ठीक है. Everyone agrees with me on this? ठीक है. Fantastic. Okay, Saurabh has downloaded the application. Awesome, Saurabh. Handy रखना application मोबाइल पे, because बहुत सारी चीज हम करने वाले हैं. Crude क्या? Nifty formed a low here and bounced back. Alternate red वाली lines देखते हैं, alternate red lines. ठीक है. Agree with me? Fantastic. Nifty formed a low here, bounced back. Lovely. Agreed? Okay. Nifty formed a low here, bounced back. Wow. This is super. ठीक है. Nifty formed a low here and bounced back. This is an amazing time cycle. Alternate cycle पे थोड़ा सा, मतलब इसके बीच वाले साइकिल पे थोड़ा सा इश्यू आता है कभी कभी. इधर लो नहीं बना एंड कंटिन्यू टू फॉल, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत था, लेकिन यहां फिर से लो बना एंड बाउंस बैक. अ लो जस्ट अ लिटिल अर्लियर एंड अ बाउंस बैक. अ लो हियर एंड अ बाउंस बैक. सो कैन आई से, डू यू just listen me very carefully, all attention here. Okay, I said pay attention and it will yield to you if only you pay attention to it. Can I say this region of cycles, a strong bounce back happens, ठीक है. This region of cycles, a weaker bounce happens. Weaker मतलब bounce होता है लेकिन इतना strong नहीं है, a weaker bounce. Do you agree with me on that? ये नहीं, ये वाला यहां पर. ठीक है. तो दोनों वक्त साइकिल तो काम कर रहा है, एक बाजू स्ट्रॉन्ग बाउंस है, एक बाजू थोड़ा वीकर बाउंस है. सो कैन आई से दिस इज द जोन ऑफ द साइकिल अगेन वेर वी एक्सपेक्टेड टू बाउंस बैक बट नॉट वेरी स्ट्रांगली. ऑल्टरनेट है ना. सी, वीक स्ट्रॉन्ग वीक. Even master of cycles participant and mentees, are you guys here? I want to know from you all. So just mention as a mentee so that I know आप मेरे mentorship के बैच में हो, मैं बैच में थे, बैच में continued हो. So just mention as a mentee so that I know Hussein is here, I know
Jayanti is here. I know. Kenil, are you there? Okay. So, and I just want to know that so many of you have been in the mentorship batch, and I'm sure this might have simply helped you to do a lot of things. Okay. So clearly I can see MOC भी है, Hussein, as I said, Prakash Jain. Okay, Prakash, fantastic to see you also here. Amit is here, Siddesh is here, Saurabh is here, MOC वाले Pratima is here, Naushab is here, Mohan, great to see you from BMW options में, great. चलिए, Rohit is here, option में view, waiting for option view. चलते हैं अभी option view पे. तो अभी ट्रेड कैसे लेना है हमें? हमें ये पता है ये डेट कौन सी है, ये डेट नोट की जाए. ये डेट है 11 जुलाई 1:30 बजे की, 11th जुलाई 1:30. वाओ, ये तो कल ही है नहीं? 11th जुलाई कल है 1:30 के आसपास. तो मार्केट का बिहेवियर कैसा हो सकता है? लुकिंग एट दिस एंटायर स्टफ, हाउ विल द मार्केट बिहेव? निफ्टी कैन कंटिन्यू टू मूव डाउन, अप, मे बी डाउन until 1:30. Then we will see a weaker bounce back, and then possibly we might move down. This is on the basis of time Nifty path ahead. Okay, so I'm going to also make a note here, just a second. So यहाँ पर अगर हम देखेंगे, this is going to be interesting. Nifty path ahead, basis of 15 minutes time cycle. See yourself to believe it. है ना मजेदार? So कल 1:30 बजे के बाद में okay, so कल 1:30 बजे के बाद में we can clearly see this is going to be very interesting कि इस तरीके से मार्केट बिहेवियर होता है क्या. प्राइस एक्शन के साथ देखना है. we don't always remember whatever you are doing you have to do it along with price action. ठीक है. so यहां पर से पुल बैक आएगा, कभी तक हो सकता है शायद पुल बैक आ जाए, मे बी 13th of July. तो मे बी निफ्टी शायद थोड़ा नीचे आए, पुल बैक दे 13th of July which is a पूर्णिमा. so we know that मंडे से बाइंग है, ट्यूसडे तक शायद बाइंग हो, 13th of July से वापस से सेलिंग हो, लेकिन मंडे के फर्स्ट हाफ में डाउन साइड प्रेशर बन सकता है. तो ऐसे सिनेरियो में ऑप्शन पे ट्रेड कैसे किया जाए? ऑप्शन पे ट्रेड करने के लिए इन दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली एंश्योर दैट यू हैव टू सेल call option once you have an opportunity of market moving up. Sell a call option. You can also sell a put option but far away strike. So selling strangle looks sensible now, but if Nifty breaks the low of 16,050 you only sell calls, not puts. ठीक है. अगर 16,050 का लेवल निफ्टी पे ब्रेक किया तो खाली कॉल सेल करना है, पुट सेल नहीं करना. ठीक है. अगर 16,300 भी निफ्टी ब्रेक किया लेकिन देयर इज अ चैनल रेजिस्टेंस, देयर इज अमावस्या का पूर्णिमा कमिंग इन व्हिच हैज फॉर्म्ड अ टॉप, सो आई विल बी स्केप्टिकल. हाँ, यहाँ से 200-300 पॉइंट रैली हो गया तब देखेंगे, और 16,190 गेन लेवल भी है एंड गैप एरिया भी है. ये सब हमने फ्राइडे को भी डिस्कस किया था, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट डिस्कशन अगेन. सो ऑप्शन का ट्रेड सेटअप क्या है? स्ट्रैंगल फार अवे स्ट्राइक का फॉर्म करना है, दैट्स वन. स्ट्रैंगल मतलब कॉल और पुट दोनों आउट ऑफ द मनी, फार अवे स्ट्राइक का हमें बेचना है. ठीक है. साथ में अगर 16,050 ब्रेक हुआ तो खाली कॉल ही बेचना है. ऊपर में अगर 16,300 के ऊपर क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज अबाउट 16,300 अगर होगा तो खाली पुट ही बेचना है. बट अगर वैसा नहीं हुआ तो हमें स्ट्रैंगल बेचना है. समझ में आया? कुछ समझ में आया कि नहीं? एवरीवन क्लियर स्ट्रेटेजी मिला?
और ये कभी तक करेंगे हम? 17 अगस्त तक। वाई? बिकॉज तब भी 55 डे का लो है। तो जो डेट हमें मिली है वो है 11 जुलाई 1:30 PM, 13 जुलाई पूर्णिमा, 17 अगस्त 55 डे टाइम साइकिल। Isn't that fantastic? And 27th of July को अमावस्या है, if I'm not mistaken. Someone can confirm that for me? Is it superb? Fantastic. Everyone, are you understanding this thing? जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि क्या करना है, कैसे करना है. All of you, is it clear? समझ में आया? Great. तो चलते हैं आगे की ओर. This is the trading strategy. Any questions, guys? Do you enjoy what we are doing here? Okay, we are going to go on a trading strategy and we are going to look at something. Trading strategy तो हमने देख ली. Okay, we are also going to be looking at something very, very interesting. Very interesting is that we are going to be looking at a free giveaway now. Okay, free giveaway. लेकिन उसके साथ में I want you to first ensure that the app is downloaded. But tell me, before we move on to the giveaway, how did you find the session? How did you find the session? अभी तक का जो भी हमने किया, is it interesting? Is it superb? Are you able to understand what all things we did? Time के basis पे? Excellent, Shalini. Thank you very much. Okay, देखिए ना, चलिए अभी बढ़ते हैं आगे. Something very interesting for all of you is that you have to download the app. Where is the app? Here is the link that I am sharing across for the app. It's time for a free spin wheel. Download the app. I will wait for some time and you have to ensure that ये download करके आप app पे log in रखो, because we will then, our analytics will then capture everything. So you have to ensure to do that. We are going to have, okay, I can see so many comments, mind blowing, all of those things are there. चलिए giveaway शुरू करते हैं. So you have to ensure you are chatting, you have to be active on the chat, as I said, and download the app. दोनों चीज करनी है. If you have downloaded, just post it on the chat box that downloaded, so that I know. So I'm going to count every one of you who is mentioning in the chat box as downloaded. और अगर आप चैट में नहीं डाल पा रहे हो डाउनलोडेड क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सो एंश्योर यू आर क्लिकिंग ऑन सब्सक्राइब द चैनल एंड डाउनलोडेड, तो ही होगा. ठीक है, सो लिखिए iOS यूजर. आई एम सो सॉरी, आप लोग के लिए नहीं है तो आप खाली उधर मेंशन कर सकते हैं iOS यूजर, सो यू विल स्टिल बी अ पार्ट ऑफ द फ्री गिव अवे. ठीक है, सो यू कैन जस्ट मेंशन दैट. ओके, गॉट इट अमित, यू आर एन iOS यूजर. आई नो यू हैव iPhone. You don't have to flaunt it. Okay, just kidding. I'm an Android phone user, by the way, but I'm using Mac, so दोनों चीजें हैं मेरे पास. ठीक है, I can see so many of you have downloaded, subscribed. Wow, fantastic. तो अभी चलेंगे, सब लोग लिख रहे हैं downloaded, so I'll just wait for few more seconds. Meanwhile I'll just show you how the app, you will get a free Elliott Wave crash course also on the app. Keep that in mind. I'm going to share across my screen. How will the app look like? So let me just share that across and फिर चलेंगे spin the wheel game पे. So are you able to see my screen here now? Downloaded लिखना नहीं भूलना chat box में if you have downloaded the app. So you can see the featured courses here which shows the 3 months of mentorship program. And by the way, this 3 months of mentorship, for participants we are ensuring you can also pay in installments, in 4 installments if you want to be a part of it. So यहाँ पर अगर मैं next करता हूँ, if you can scroll down, see the mentorship, click on that. Once you click on this, get this course का button on the app. Once you go next, on the right hand side, you will see the option where is the option of pay in installments. ये facility हमने launch की है only for the app user. You can do that. You can make use of that if you want to be paying in installments. As soon as you register for this mentorship, you will be getting lot of stuff immediately access on the application itself. आपको मिलेगा Master of Technical Analysis का course, immediate access. आपको मिलेगा Elliott Wave का course, immediate access. 20 bonus videos जो होगा वो मेरी टीम आपके लिए सेट करेगी. फिलहाल ऐप पे अपलोड करना पेंडिंग है टू बी ऑनेस्ट, तो वो आपको कल मिलेगा. साथ में आपको मिलेगा
लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, वो हम बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 40K 39K का, and the value that you are going to get is much more than 39K. Imagine 20 bonus videos, master of technical analysis, Elliott wave course ka access, all of these things you get now itself. That itself is worth what you pay. That's what I want to create as a value for people. Plus access to the private telegram group. Today it's active, it's kicking. वो एक्सेस भी आपको मिलेगा ऐप के ऊपर। ये गिव अवे नहीं है, ये तो मैं खाली मेंटरशिप के बारे में बता रहा हूँ। सो मेंटरशिप पे इज ऑल अबाउट हाउ टू ट्रेड द मार्केट विथ मी। लाइव एक्सेस तो होगा ही। 3 Saturdays we are going to meet. For 3 Saturdays we are going to look at in a 3 month, over the period of 3 months, 3 Saturdays साथ में लाइव ट्रेडिंग होगा। We will do live trading together also. Apart from that, you will have access to Master of Waves live session, option trading live session. You'll have access to Master of Cycles. All of those will be yours eventually, step by step. So you just have to ensure you have to continue to chat with me. So यहाँ पर you can clearly see. So this is the facility which we have given on the app. So ensure you make use of that about mentorship. And also now we will move on. I think many of you have downloaded the app, so you can clearly see there will be offers and other things. Crash course भी रहेगा आपको Elliott wave का app के ऊपर है. So if you go here, there is a free Elliott wave crash course. This is for people who just want to see Elliott wave in 1 hour. मतलब जिसको पता है Elliott wave वो सीख पाएंगे, नहीं तो don't worry about that. So एक free crash course हमने रखा है. You can get it on the app. यहाँ पर आपको दिखेगा Elliott wave crash course when you scroll it. Now is the time. Everyone is ready for a spin of wheel, and जो भी आएगा वो मैं आपको दूंगा आज के दिन में. Everyone is ready for a spin of the wheel. Okay, ठीक है, चलिए. I can see everyone is ready for that. Let me open up my spin wheel. देखते हैं उसके ऊपर क्या क्या options है, क्या क्या आप कर सकते हैं. And I am going to share across my screen. I can see people have subscribed to the channel, chatting, जो लोग ने चैट किए, एंड ऐप डाउनलोड किए. दिस 3 conditions have to be there. चलिए यहाँ पर अभी मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विच इज ओवर हियर. दिस इज स्पिन द व्हील. सो टेल मी क्या चाहिए आपको यहाँ पर. आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. ये मेंटरशिप फ्री नहीं है. आप इफ यू रजिस्टर फॉर मेंटरशिप, इफ यू पे फॉर द मेंटरशिप, you will get 1 month of equity report free also. If you register for mentorship, you will get 1 month of equity report. You get immediate access to MOTA, as I said. You get immediate access to Elliott wave video links right now. You get access to 20 bonus videos. You get access to private telegram group. All of those things will happen, and you can pay in installments of 39K on the app. मैंने बताया वहां पर जाके आपको खाली क्लिक करना है and pay in installment आपको दिखेगा. ठीक है, चलिए. आर यू रेडी? सो टेल मी व्हाट डू यू वांट ऑन द व्हील. क्या चाहिए व्हील पे? आई विल टेल यू क्या क्या ऑप्शंस है. 1 week of free Nifty research report on the app. These are all on the app you will get. Yeah, 1 week of equity report. Yeah, 5 bonus videos. Yeah, 1 week of commodity report. इसके साथ एक और चीज करते चलिए. कमोडिटी के साथ एक मल्टी बैगर स्टॉक भी मैं आपको दे दूंगा. ठीक है. सो क्या ऑप्शन चाहिए आप लोगों को? और ये है मेंटरशिप के साथ में 1 month ऑफ इक्विटी रिपोर्ट. एक और काम करते चलो. अगर आज आपने मेंटरशिप के लिए रजिस्टर किया, 1 month ऑफ इक्विटी रिपोर्ट के साथ आई विल गिव अवे माय साइंड कॉपी ऑफ माय बुक. इफ यू रजिस्टर, irrespective ये व्हील पे आए कि नहीं, आई विल गिव अवे अ साइंड कॉपी ऑफ माय बुक, irrespective whether this comes on the wheel or not, if you register for mentorship today. Do you want that? Do you want that today? This is only for today. If you are doing it and you are using that, you can do it in installment or you can do it in one go. So what option do you want? Let's see. देखते हैं power of people. What option do they want and what comes up? क्या चाहिए आपको? All of them. Okay, all of them तो नहीं होगा. Spin the wheel है. एक ऑप्शन आएगा. 5 bonus videos is what people require. ओके, कॉपी ऑफ द बुक के लिए तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. मेंटरशिप के लिए वो तो ऑप्शन है ही, मतलब वो डिफॉल्ट है, मतलब वो मिलना ही है आपको. ठीक है. तो कौन सा वाला ऑप्शन चाहिए? 5 बोनस वीडियोस. ऑल ऑफ देम तो नहीं होगा. वाओ, आई थिंक बोनस वीडियोस इज व्हाट पीपल आर मोस्टली एक्सपेक्टिंग. दैट इज इंटरेस्टिंग. आई थॉट लोगों को निफ्टी रिपोर्ट चाहिए होगा या वीकली रिपोर्ट, बट यू नो दैट इज द बेस्ट पार्ट.
कि सीख के ट्रेड करना चाहते हैं लोग, एंड दैट इज ब्यूटीफुल, राइट? दैट इज वंडरफुल. 5 bonus videos is what people need. Everyone needs 5 bonus videos. स्पिन द व्हील करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है. चले करें स्पिन द व्हील, देखते हैं क्या आएगा. मुझे भी नहीं मालूम, एक ही स्पिन होगा. वी आर गोइंग टू डू ओनली वन स्पिन एंड लेट्स जस्ट चेक. Now this is interesting. Let's see what comes up. This is fantastic. ये मैंने सेट नहीं किया बॉस. This is register for mentorship and you get 1 month of equity research report plus signed copy of my book with mentorship, along with mentorship. Now see, this is not, I can't really preset it, to be very honest. I don't even know. So bonus videos nahi aaya. So that is unfortunate instance, and it shows register for mentorship, and you will be getting, along with that, you will be getting 1 month of equity research plus you will be getting, register करना पड़ेगा भाई, free नहीं है, mentorship is paid. So and you can pay in installment, and you will be getting along with that, you will be also getting my signed copy of the book if you go and take that step forward and take that action. So that is something interesting. Kautilya has already registered, लेकिन आज register करना चाहिए आपको उस चीज के लिए. Okay, all of those things, this is really amazing. Very, very interesting, right? Every one of you. नीरज कुमार रजिस्टर 2 days बैक. चलता है ना नीरज. चलिए, आपके लिए जिसने 2 दिन पे आप भी पहले रजिस्टर किया, क्या कर सकते हैं? मतलब दिस इज स्पिन द व्हील. आई डोंट रियली हैव एनीथिंग टू डू अबाउट इट, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है. चलिए एक और काम करें. शेल वी स्पिन द व्हील वंस अगेन? नाउ फाइनल टाइम, whatever comes. So this option is there. You register for mentorship, you get 1 month of equity research for free plus you get a signed copy of the book. ये तो आ गया. एक और चीज करते हैं, we spin the wheel में. Shall I do that? If everyone is agreeing with a big yes, then I will do it. Otherwise क्यों करे यार? I'm just giving away. My team will say we had only 1 wheel and we had 1 round to do it. But अगर हम इतने बार करेंगे तो सब चीज सबको मिल जाएगी. लेकिन download the app. Again, I'm repeating before I go on to the spin the wheel. Download the app now, and then we will spin the wheel, and then only you will be able to do that. Okay, very, very clearly. Download. सबने ऐप डाउनलोड किया? चलिए, let me just do that very, very clearly right now. अभी अगर mentorship और वो आया तो I can't really help it. Again, the same thing if it comes up that way. Wow, guys, I'm not giving you any other thing but mentorship. This is what it is. So this is what it is. This is mentorship plus 1 month of equity research. Again, now I had no role to play. I don't know how it functions, but this is something very different. So that's already happened. So as a giveaway, what I'll do again is, I'm not going to spin the wheel. I will give you 1 month of equity research plus signed bonus videos. If you register for mentorship today, you can make use of the installment facility. आपको mentorship course पे जाना है, वहां पर करना है. You will get installment facility. As a giveaway, I'm giving you past 3 reports which is there. अभी मैंने 2 बार रोटेट किया और दोनों बार वही आया, तो I can't help it, right? Now this is, अगर मैं बार बार रोटेट करूं जब तक जो चाहिए वो नहीं आए तो पॉइंट ही नहीं हुआ स्पिन द व्हील का. ठीक है, तो 3 days का रिसर्च रिपोर्ट ऑलरेडी ऐप पे है. यू all of you, since you have taken that pain of downloading the app, I don't want you कि आप निराश होकर जाओ. You can go and register for mentorship program. Let me share my screen again. That is very interesting. And कहाँ गया मेरा? यहाँ पे. So let me just explain. Free giveaways for people who are participated here. So don't feel bad. People who have participated here, there is something for every one of you here. यहाँ पर आपको जाना है, स्क्रॉल करना है,
you will see as a featured course on the app 3 months of mentorship program. You simply, this is including the GST price, GST included है इसमें, ठीक है. Get this course पे click करना है आपको. Once you click on get this course, you can then go and simply scroll down. Once you scroll down, there is an option for paying in installments. You can do that. You can pay in installments and you can click on that. That is the one option. You will get a signed copy of the book. You will get, along with that, you will also be getting, as I said, 1 month of equity research. Now, for people, for everyone, there is already an Elliott Wave crash course for you all. 1 hour का crash course है, लेकिन ये crash course है. अगर आपको Elliott Wave के बारे में थोड़ा पता है तो ही ये crash course में आपको देखना है, एक रिवीजन के लिए, ठीक है. ये देख के नहीं तो आपको लगेगा यार समझा नहीं, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है. सो क्रैश कोर्स मिल रहा है. इसके साथ में टू मेक इट लुक्रेटिव फॉर यू ऑल, देयर इज अ स्टडी मटेरियल हियर, फ्री कंटेंट ऑफ स्टडी मटेरियल इन विच निफ्टी का 3 डेज का रिपोर्ट ऑलरेडी सेव्ड है. वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का रिपोर्ट है जो आपको यहां से मिलेगा, वो आप देख सकते हो. To make it more lucrative, since you downloaded the app, I don't want you to go निराश यहाँ से. मंडे मॉर्निंग का रिसर्च रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल के फॉर्म में मिलेगा एज अ गिव अवे. आई एम गिविंग दैट टू यू ऑल, एंड बिकॉज यू आर विथ मी हियर, आई एम गिविंग दैट अवे टू यू ऑल, एंड आई होप दिस इज गोइंग टू मेक इट वर्थवाइल. साथ में जो आपने सीखा, और जो आप लोगों को बोनस वीडियोस की बात कर रहे थे बहुत सारे जन, तो एक काम मैं करता हूं, मेरी टीम को मैं बोलूंगा 2 बोनस वीडियोस ऐप पे डाले. जो फ्री बोनस वीडियोस है, पुट 5 नहीं दे सकते बिकॉज अदरवाइज वो गेम जो हमने खेला उसका मतलब ही नहीं हुआ. 2 बोनस वीडियोस डालेंगे जो आपको मिलेगा ऐप के ऊपर. इज इट ओके? फेयर इनफ. You get 2 bonus videos, you get Elliott Wave crash course, you get 3 research reports, you get free research for Monday, which is going to be published tomorrow. Are you guys happy? Plus mentorship के साथ signed book copy, plus you get 1 month of equity research, plus you can pay in installment. Now what more giveaway can I do than this? ठीक है. So this is, I'll ask my team to please make a note of it, because I don't want people who have given their time to me on a Sunday goes that nirash. Okay, so I was thinking this webinar is going to be happening only for about 30 minutes. To be honest, the time set was 30 minutes. I just now asked my team to extend the time because just now मतलब थोड़े time पहले मैंने बोला, I never realized that we will be just discussing so many things about markets, lunar cycle, साथ में 55 day cycle, साथ में 15 minutes cycle, and so many things that we looked at. And mentorship is for 3 months, 1 month नहीं है. mentorship आप मेरे साथ में 3 months के लिए हो. आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस दिया जाएगा, लाइव ट्रेनिंग सेशंस होगा, साथ में इमीडिएट एक्सेस आपको जो मिलेगा वो कोर्सेज का रिकॉर्डिंग्स मिलेगा. सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू सीइंग ऑन द ऐप will be yours if you are a part of mentorship. ठीक है. So ensure you do that, including the book I am talking about, if you register today for mentorship program. Okay, I can see so many of you are happy and downloaded the app. Thank you very much, guys. Really loved it, enjoyed it, and spin the wheel was fun. I'm sure it was fun for you all as well. And thank you, everyone. And do ensure you subscribe to the channel so that you are putting your comments in the chat, because only if you are putting comment in the chat and downloading the app now and today, you will be accessing the free giveaways that I have given you all. Thank you very much. Have a wonderful day, and the 2 bonus videos. So my team, please make a note. We will upload 2 bonus videos for them. We will upload tomorrow's research report for everyone. And we have to give signed book to everyone who is registering for mentorship today. And installment facility is also possible only on the app. Thank you. Have a wonderful time. Have a wonderful day. Love talking to you all. And this was simply fantastic. And you know, I derive a lot of energy when I speak with you all, because this shows that whatever we are doing, people are loving, people are learning, and it is brilliant. See you again,
And next week, I'm going to be on CNBC Awaaz Khiladi #1. Do follow me there. And I'm also there on Twitter @Kyal Ashish. Lot of tweets happening. कल मैंने एक chart tweet किया था. We already have nearly, I think, 120, 130 likes and sharing and retweeting happening. So a lot of things happening. So that's the thing. It's fair and great. मजा आ गया. चलिए मुझे भी बहुत मजा आया. Spin the wheel खेल के आप लोगों के साथ. It was super fun and excited. And see you all the mentees. Don't worry. We are going to do a lot of things in the mentorship program. We are going to be live starting on 30th of July. And the early bird, the price which you see is going to change from 15th July. The early bird is ending. And today, if you register, you get a lot of things as a bonus. Have a wonderful day. Ashish Kyal signing off.